All right, so this is a very common question that students are sending these days and trying to attempt and are very scared of. This is which paper? This is October November 2023 to 1. ठीक है, उसका ये वैसे तो सजेशन ये है कि एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव को कोशिश करें कि इग्नोर करें until unless you have a very solid grip on these concepts. ठीक है, लेकिन हम फिर भी इनको आके देख लेते हैं कि इसमें करना क्या है. Assess whether the theories of absolute and comparative advantage are substantially undermined by their various limitations. अब इसके दो साइडें क्या बनी? Absolute और comparative advantage are substantially undermined by their various limitations. ये मैं भी ड्राइव करते हुए आ रहा था, मैंने अभी किसी को ऑनलाइन वॉइस नोट पे भी समझाया. देखते हैं, शुरू करते हैं. कुछ जो नंबर ले सकते हैं वो तो लेते हैं ना भाई. Theories of absolute and comparative advantage. The question is, knowledge understanding तो इसका देंगे और अच्छा खासा देंगे. कितना देंगे? Do we need to make that डब्बा thing numerical? I don't think so. न्यूमेरिकल की तरफ ना जाएं, डेफिनेशंस में बताएं एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव. ठीक है, और ये बताते हुए तो सबसे पहले नंबर 1 मेरा ये मूड है कि मैं एब्सोल्यूट को डिफाइन करूं. नंबर 2 मेरा मूड है मैं कंपैरेटिव को डिफाइन करूं. और जब मैं ये काम कर रहा हूं इसके साथ, इससे पहले या इसके बाद क्या करूं? अजम्पशंस मेंशन करूं. इसकी अजम्पशंस मेंशन कर दूं. आर substantially undermined by their various limitations. हाँ जी, पहले तो जो, अब मैंने इसकी खुद मार्क्स स्कीम नहीं देखी हुई, लेकिन जो मेरे सेंस कह रही है, लिखें क्या हम इसमें? व्हाट आर द टू साइड्स? वन साइड वी आर वेरी क्लियर ऑन, एंड व्हाट इज दैट? दैट वी हैव टू क्रिटिक ऑन इट्स लिमिटेशंस. अजम्पशंस ही लिमिटेशंस हैं इसकी बेसिकली. ठीक है, लेकिन हम इसमें दूसरी साइड क्या बनाएं कि एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज आर एक्सीलेंट थ्योरीज. ठीक है, इसमें आप क्या डिस्कस करेंगे? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. बिकॉज बोथ theories, what do they say? They say कि you should specialize in whatever product you have a comparative advantage or an absolute advantage. समझ आ गई? तो पहले समझा दी, ये पहला स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप क्या है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड. क्योंकि दोनों ये कह रही हैं कि आप स्पेशलाइज करें और ट्रेड करें, तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड आ जाए. फिर the other side of the argument is, what is the other side of the argument? क्रिटिक, कि नहीं भाई ये दोनों थ्योरियां फारिग हैं. They are not good at all, they are useless. Why are these theories useless? ये कौन सी दुनिया है जिसमें दो मुल्क हैं? ठीक है, टू कंट्रीज एंड टू प्रोडक्ट्स. ये कौन सी दुनिया है? दूसरा, ये जितने भी कंपैरेटिव एडवांटेज और एडवांटेज की बात कर रहे हैं, दिस ऑल इज गॉन टू डस्ट इफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स आर एडेड. हो सकता है हमें कंपैरेटिव एडवांटेज और बहुत अच्छा हो हमारा ब्राजील के साथ, लेकिन मसला क्या है? ब्राजील पता नहीं कोने में या दरमियान में अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहां से कुछ भी मंगवाएंगे तो वो ट्रिपल महंगा हो जाएगा. प्रोटेक्शनिज्म ओवरऑल, ये तो सारी बातें हो रही है कि देयर आर नो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज. अगर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज आ गई तो सारा कंपैरेटिव एडवांटेज लूज हो जाएगा. एक और क्रिटिक क्या है? एक्सचेंज रेट may not lie between the two opportunity cost ratios. Exchange rate does not lie between the two. हाँ वही ना, तो advantage is lost. तो वही वही बात कर रहे हैं. exchange rate may not lie between the two opportunity cost ratios. ठीक हो गया. और एंड पे इवैल्यूएशन यही है कि दे डू वर्क, यस, लेकिन इसकी लिमिटेशंस बहुत है. आजकल वैसे ही लड़ाई झगड़े बहुत हैं. आजकल रिलेशंस पे भी डिपेंड करेगा दो कंट्रीज के, कोई प्रोटेक्शनिज्म के साथ ही आ जाएगा. ठीक है, ट्रेड वॉर्स हो रही है वैसे ही आजकल, वो भी प्रोटेक्शनिज्म के अंदर आ जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, तो इतना ज्यादा उस तरह फायदा
नहीं है, लेकिन ओवरऑल ट्रेड और स्पेशलाइजेशन का फायदा ही होगा। ये भी एक क्रिटिक है कि अगर आप एक कंट्री सिर्फ ओवर स्पेशलाइज ना कर ले, ओवर स्पेशलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा इस पे क्रिटिक है कि आप एक ही चीज तो नहीं ना बना सकते बाकी चीजें। फिर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन विच यू आर स्पेशलाइजिंग, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पे भी तो डिपेंड करता है। हम आलू प्याज टमाटर में स्पेशलाइज कर लें और वेपन्स पर कैसे लेंगे दूसरे कंट्री से। हाँ मतलब ओवर स्पेशलाइजेशन टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी एक ही में आ जाएगा। फिर व्हाट इज, तो ये सारी इसकी क्रिटिक्स हैं। Do we- वैल्यूएशन में भी आप यूज कर सकते हैं, तो ओवरऑल क्या होगा क्या नहीं होगा आइए देखते हैं जी। हाँ हाँ, दोनों को बेनिफिट सेम है, दोनों को इकट्ठे लेके चलेंगे। हाँ अब देखते हैं कि एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, दिस इज व्हाट आई थिंक। एग्जामिनर पता चले कि सब उल्टा कह रहा हो, अंडा आ जाए हमारा। वो कहते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज बताएं, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बताएं, हाउ आर दे यूज्ड, हाउ दे कैन बी यूज्ड इन द रियल वर्ल्ड। नहीं अभी क्रिटिक पे तो नहीं आएगा, हाउ दे आर यूज्ड इन द रियल वर्ल्ड वो डेफिनेशन में ही आ जाएगा सॉर्ट ऑफ। मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं वो न्यूमेरिकल तो नहीं मांग रहा, लेकिन वो होता तो वो पर्टिकुलरली कहता, न्यूमेरिकल नहीं बनाना। Assumptions underlying these theories in such a relation to only two products being traded, existence of perfect competition in both product markets and factor markets. जल्दी से खोलें, एब्सोल्यूट एडवांटेज की खोलें जल्दी से स्पीड मार दें। ये वैसे हम A2 में करते हैं, लेकिन क्योंकि उसने कह दिया है तो आपने करना ही करना है। यार ये क्यों इसने कह दिया है, ये दोनों A2 के कॉन्सेप्ट हैं। चलें लिखें आप बारह assumptions देखिए एब्सोल्यूट एडवांटेज की, जो हमने लिखी हुई थी उसमें ऐड करें, जल्दी से ऐड करें, हर बंदा ऐड करे। There is perfect competition in both product market and factor market. Perfect competition in both product market and factor market. In other words, monopoly नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्म्स हैं छोटी छोटी जो कि बना रही हैं वो प्रोडक्ट। डू वी अंडरस्टैंड दिस? मोनोपोली आ जाती है फिर वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकती है, तो वो कंपैरेटिव एडवांटेज को कभी भी चेंज कर सकती है या यू अपने लिए एक्सप्लॉइट कर सकती है, ठीक है। Within that country there are many firms that are producing each product। हाँ हाँ, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे ही दो कंट्रीज। बात समझ आई? विद इन द ईच कंट्री देर आर मेनी फर्म्स विच आर कंपीटिंग अगेंस्ट, देर इज हेल्दी कॉम्पिटिशन इन अदर वर्ड्स। आपके स्टेज पे ये कांस्टेंट रिटर्न्स को आप ना लिखें, छोड़ दो ये। हाँ बस ये पागल है आपका एग्जाम में, इसको छोड़ दें ये, क्योंकि या तो रट लें और लिख लें, इसका मतलब समझाने में तो हमें पूरी 10 साल लग गए। ये A2 का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, लिमिटेशंस ऑफ दीज थ्योरी सच एज इन रिलेशन टू द फैक्ट। अच्छा वो एडवांटेजेस की बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहे बस दोनों को समझाएं और दोनों का हल्का फुल्का स्पेशलाइजेशन का हल्का सा टच करें। Such as in relation to the fact that trade will involve more than two products, perfect competition will not apply to cost of transport, producers may experience economies of scale, reducing cost of production. There may well be trade restrictions in different parts of the world in the form of different methods of trade protection. Considers various assumptions of the theories. In conclusion, are the theories substantially undermined by the various limitations? कर सकते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज पे ट्रेड हो रहा है ना, और एब्सोल्यूट एडवांटेज पे ही हो रहा है। हम आम क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास, हमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है। हम चावल क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमें कंपैरेटिव एडवांटेज। हाँ लेकिन पाकिस्तान को फिर उसमें स्पेशलाइज करना चाहिए, दे आर एब्सोल्युटली वर्केबल। लेकिन ये हम बहुत इस स्टेज पे, आप तो ये कह रही हैं फिर ट्रेड भी होना चाहिए। ट्रेड जितना भी हो रहा है या एब्सोल्यूट एडवांटेज की बेसिस पे हो रहा है या कंपैरेटिव एडवांटेज की बेसिस। हाँ वो ये इसमें असम्पशंस बहुत है और लिमिटेशंस बहुत ज्यादा। हमने कहा था ना कि ट्रेड सिर्फ तब होगा जब एक्सचेंज रेट फीजिबल होगा, रियलिटी में देखा जाए। और अपनी एग्जांपल में एक्सचेंज रेट शुड फॉल बिटवीन द टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज। व्हाट इफ इट डज नॉट? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आइडियल है उनके लिए, लेकिन हमारी करेंसी इतनी ओवर वैल्यूड है कि जब वो खरीदते हैं, हम मंगवाते हैं वहां से, तो वो बहुत महंगा पड़ता है।
समझ रहे हैं, हम एक चीज बना रहे हैं, यूके एक चीज बना रहा है। समझ रहे हैं, एक्सचेंज रेट वाली बात का पूछ रहे हैं। हम हम महंगा बना रहे हैं, यूके रिलेटिवली हमसे चीपर बना रहा है। अंडरस्टूड। लेकिन क्योंकि यू हम जब एक पाउंड्स खरीदते हैं तो पाउंड महंगा इतना है कि वो हमें, देन इट्स नॉट feasible for us. Do we get it? चलें जी आगे। चलें जी, तैयारी पकड़ें, कोशिश करते हैं इसको अटेम्प्ट करने की। है ये मुश्किल सवाल? चलें जी, इधर आ जाएं एंड आई नीड टू शेयर दिस स्क्रीन। Here we go. यार ये पुराना वर्जन जो आ गया है इसका। All right जी, assess whether theories of absolute and comparative advantage are substantially undermined by various limitations. Theories of absolute and comparative advantage. It is not necessary that everyone writes this, ठीक है, क्योंकि मैं YouTube पे अपलोड करूंगा तो ये वैसे ही आप लोगों को मिल ही जाएगा। लेकिन आप, मैं चाहूंगा कि आप यू स्टे विद मी, ये ना देखें कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, साथ साथ लिखें ताकि आप एक्सपीरियंस करें कि किस तरह आंसर को फॉर्मेट किया जाता है। Theories of absolute and comparative advantage help explain the flow of trade amongst different countries. Country is said to have an absolute advantage when it can produce more quantity of a product as compared to another country producing the same product. On the other hand, comparative advantage is when country can produce the same product more cheaply, that is at a lower opportunity cost than the other country. Both theories state that if country completely or partially specializes in the product
in which it has an absolute and or comparative advantage and then trades it with another country doing the same, both countries will benefit as world output is likely to increase. Both these theories are based on some underlying assumptions. Two country and a too good world is assumed for simplicity. Quality of the products they produce is also assumed to be the same. Moreover, no transportation costs are assumed along with the assumption of free trade. Along with the assumption of free trade. This implies that there are no protectionist policies used by either trading partner. No transportation cost. Good check. Furthermore, it is assumed that there is perfect competition in both the product and factor market. This means
ऑल फर्म्स, अब ये थोड़ा सा A2 का नॉलेज है, परफेक्ट कंपटीशन वाला। ऑल फर्म्स सेल at the prevailing market price, and one firm cannot influence the market price. अच्छा, अब मैं वो भी लिखने लगा हूं जो उसने लिखा हुआ था, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। आप लोगों के सर के ऊपर से गुजरेगा, ये मैं सिर्फ लिखने के लिए कह रहा हूं। आपने इसको रिप्रोड्यूस ना भी करें इस पॉइंट को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल are also assumed, that is, each additional each additional factor of production employed produces the same output. Each additional factor of production employed produces the same output. कितनी लेंथ हो गई? एक पेज हो गया? ठीक है, आए जी। Assess whether theories of absolute and comparative advantage are substantially undermined by their various limitations. यूजुअली जो एब्सोल्यूट, ये बड़ा अनऑर्थोडॉक्स किस्म का क्वेश्चन है। यूजुअली जो एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज का आता है ना, वो लिंक आता है स्पेशलाइजेशन से। स्पेशलाइजेशन का फायदा है, नुकसान। वो हमने सिंपल एडवांटेजेस लिखे हुए थे और फिर हमने इसकी की क्रिटिक के साथ साथ डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, आ जाए जी। आर सब्सटैंशियली अंडरमाइंड बाय देयर वेरियस लिमिटेशन। जी, ये लें। However, there are, अच्छा, what is the keyword? Certain limitations. What is the keyword? वापस आए। सब्सटैंशियली, बिल्कुल फारिग हो जाती हैं ये थ्योरीज या नहीं? ये थ्योरीज अपनी लिमिटेशंस की वजह से बिल्कुल फारिग हो जाती हैं या चल जाती हैं? तो हमने समझाया थ्योरीज क्या है, हमने वो इसकी अजम्पशंस लिख दी, फिर हम लिमिटेशंस लिख रहे हैं, फिर हम इवैल्यूएशन करेंगे कि बिल्कुल फारिग हो जाती हैं या गुजारा चल जाता है, ये थ्योरीज कुछ काम भी आती हैं या सिर्फ दिस इज ऑल क्रैप। However, there are certain limitations of both these theories. In reality, due to complex trade, trade relations between many countries, the assumption of two-country world may not stand feasible. Similarly, there are numerous goods and services
which countries trade with each other, whereas the theories are limited to explain trade flows of countries producing only two goods, producing only two goods. Moreover, in reality, the exchange rate may not lie between the two opportunity cost ratios, implying that an exchange rate may offset any comparative advantage a country has over another. A country has over another. It is also assumed that there are no transportation costs. However, in reality, any advantage in quantity or cost can be cancelled off due to high transportation costs. Furthermore, क्या रह गया हमारे पास? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया ना. ओवर स्पेशलाइजेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्क्स स्कीम में नहीं था इसलिए हम नहीं लिख रहे. वैसे ओवर स्पेशलाइजेशन वो था प्रोटेक्शनिज्म. फर्दरमोर, इन रियलिटी there may be different protectionist policies levied by trading partners which may eradicate any comparative advantage. बात समझ आई?
एक कंट्री से आपको सस्ता पड़ रहा है, आपको मंगवाना चाहिए, लेकिन आपके ट्रेड रिलेशन ही नहीं है, या फिर आपने 200% टैरिफ लगाया था, तो वो, हाँ, हाँ, वो जरा कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होगा, लेकिन आप रियलिटी में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इतना कुछ है लिखने को। सही बात समझ। अच्छा, अब मैं उसको भी क्रिटिक कर रहा हूं जो हमने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लिया हुआ है। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो देखें, वो एक्सपेक्ट करता है, लेकिन बुरा भी पागल है ना। हाँ, ये नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ था। अब नई मार्क्स स्कीम्स में नहीं लिखा होगा। यस, ऑल वैलिड, इसमें लिखा हुआ ऑल वैलिड। हाँ, इसमें यूजुअली हर क्वेश्चन में नहीं होता। और हाँ जी, कितनी होगी लेंथ? ठीक है, 1.5 काफी है। आ जाए जी वैल्यूएशन में। क्या ख्याल है, ये थ्योरीज हैं किसी काम की या फारिग हैं? लिमिटेशंस खराब कर देती हैं सब कुछ। प्रैक्टिकलिटी में नहीं है, तो कह दें सब्सटैंशियली अंडरमाइन कर रही है। ठीक है, कह दें, कह देते। टू वैल्यूएट whether these theories are undermined by their limitations, their application in the real world must be assessed along with comparison of their use and limitations. The limitation that both these theories are based on bilateral trade. Both these theories are based on bilateral trade rather than many countries, and they assume only two goods being produced, make them insufficient. Insufficient, insufficient का कोई सिनोनिम बताएं अच्छा सा। Make them inapplicable, inapplicable to the real world। क्या ख्याल है? हाँ, inapplicable to the real world। Moreover, in contemporary times, where
there are trade wars and constantly increasing ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये तो अभी बहुत रेलेवेंट हो गया है ना, अभी हम दोनों चीजें देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल प्राइसेस ऑफ ऑयल, use of such theories may be undermined. Hence, it may be concluded दो पॉइंट्स हमने दे दिए है ना, may be concluded that what, याद रखें जितना मर्जी आपने फजूल लिखी हो एवेल्युएशन, क्या होता है आखिरी इंपैक्ट फाइनल स्टेटमेंट से आपकी रेलेवेंस पता चलती है। Theories of absolute and comparative advantage are substantially undermined by various limitations. It can be concluded that theories of absolute and comparative advantage can be are substantially undermined by their various limitations। लेकिन निहायत ही अनऑर्थोडॉक्स किस्म का क्वेश्चन है ये। अब समझ आई मैं क्यों कह रहा था ये नो गो एरिया। समझ रहे, कोई एज सच दो साइडें नहीं बन रही, एक साइड पे हमने सिर्फ assumptions लिख दी और दूसरी साइड पे हमने उनकी क्रिटिक लिख दी, वही रिपीट करके उसकी क्रिटिक कर दी और यही ये क्वेश्चन मांग रहा है। और इवैल्यूएशन में भी वही assumptions हैं ओवरऑल, फिर हम देख रहे हैं रेपिटेटिव है, समझ नहीं आती, कभी कभार स्पेशलाइजेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। सो दिस इज अ नो गो एरिया। बहरहाल हमने कोशिश की है कि हम कुछ ना कुछ कर लें। खैर हमने मार्क्स टीम से भी हेल्प ली है, लेकिन बनता था इसमें। तो मेरा ख्याल से दिस इज फेयरली फाइन। लेवल 3 तो है क्योंकि हमने दोनों साइडें एड्रेस कर ली एनालिसिस में। एवेल्युएशन में भी कुछ ना कुछ नंबर आ ही जाने चाहिए, एक दो तो आ ही जाए, तो हमारे 9-10 आ जाए। तो गुजारा हमने कर लिया। ये कोई बहुत ही 6 मार्कर आ जाए अगर, ठीक है, तो फिर आप अटेम्प्ट कर लें। अब वो तो करना ही पड़ेगा केस स्टडी में, उसके लिए जरा हमें एडवांटेज हो जाएगा ये। ठीक है, इज दिस क्लियर? यहां आज लगाते हैं ब्रेक।